हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम एक रिएक्शन देने वाले हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्यों गूगल सर्च नीचे की तरफ जा रहा है। हम यहाँ कंपनी एज ए गूगल बात नहीं कर रहे हैं, उसके एक प्रोडक्ट गूगल सर्च के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब आप एसईओ की बात करते हो, एसईओ और गूगल सर्च एक दूसरे से बहुत ही टाइटली कनेक्टेड है, क्योंकि सर्च इंजन में गूगल को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। बीइंग हाल ही में एआई फीचर्स की वजह से कुछ कैचअप किया है, बट अभी भी मार्केट 80 to 90% गूगल के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और जब हम इसकी फेलिंग की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ ऐसे मेजर कॉज हो गए। मैंने मिस्टर हु इज द बॉस के एक वीडियो को देखा और उसमें मुझे वर्थ लगा कि आपके साथ भी वो शेयर किया जाए और उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। कुछ एडेड इनपुट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये मस्ट है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को साथ साथ देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। Google search has become a lot worse than you think. Look at this. Let's say how to secure my data. Okay, so 1, 2, 3, 4 adverts. These are all sponsored links. Like, imagine if you clicked on one of our YouTube videos and I chose to start with 4 sponsored ads before I even got into the content. Google used to be magic. It's easy to take for granted nowadays, but the ability to just find anything you wanted in like 5 seconds was revolutionary when it was new. But I've been noticing more and more over the last few years, things starting to feel a little off. So I've done a deep dive. No thanks to Google. And I found the 3 major reasons as to why Google search is not just in decline, but it's borderline broken now. And the way that they started changing this results page is the first. Like, look at this again. Do you notice something? Because aside from the fact that 4 ads before your content feels almost violating, the thing that's even worse is when you consider something called the fold. The imagined line where if you want to see anything past it, you have to take action, like scrolling down. The term comes from newspapers, where you'd want to put the most important... बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के गूगल सर्च में कि आप बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन रह नहीं गया है आपके ऐड और आपके रेगुलर ऑर्गेनिक रिजल्ट पेज के बीच में। और ये बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया गया है, क्योंकि पहले 2 एड्स आते थे, फिर 3 हुए और अभी 4 है। यानी अगर आप फर्स्ट फोल्ड की बात करो, जो फर्स्ट आपके स्क्रीन पे जो आपके गूगल का रिजल्ट आता है 4, वो सारे ऐड हो सकते हैं और उसमें एक माइनर बस एड्स लिखा होता है, कोई और कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आप अगर नॉर्मल पर्सन हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑर्गेनिकली आया है या फिर ये जो ऐड है उसका ही पार्ट है। आगे देखते हैं। Information not just on the front page, but specifically on the top half of that front page, so that people can see it even when the paper is folded up in stacks above the fold. Now, newspapers never got to a stage of having so much power that they could regularly afford to stick big adverts across their fold. They needed the fold to convince people to get the paper in the first place. But compare that to now, where the entire fold is just sponsored content, and it's starting to feel like Google's gotten too comfortable. Google has become so at ease that they don't even feel like they need to convince people to use them anymore. This company... Exactly. जब आप यहाँ देख रहे हो कि सिर्फ स्पॉन्सर लिख देने से बहुत सारे लोग का उस पर नजर ही नहीं जाएगा कि ये स्पॉन्सर है। पहले कुछ येलो कलर होते थे ताकि आपको पता चलता था। येलो पेज पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग पैम्पलेट बांटते थे, तो वहीं से येलो पेज आया। बहुत सारे येलो पेज मतलब एडवर्टाइजिंग साइट्स ही होता है उसका मतलब। तो गूगल भी अपने सर्च रिजल्ट में पहले 4 जो एडवर्टाइजिंग रखता था उसके पीछे का बैकग्राउंड येलो होता था। यूजर को इजिली डिफ्रेंशिएट हो जाता था कि ये जो है ऐड है और बाकी ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ऑर्गेनिक रिजल्ट मीन्स समथिंग दैट इज हैविंग अ वैल्यू, तभी तो लोग उसको देख रहे हैं, तभी तो क्लिक कर रहे हैं, तभी तो वो टॉप पे है और गूगल भी उसको रैंक करता है। गूगल भी फेमस इसीलिए हुआ था क्योंकि जो वैल्यू एडेड कंटेंट है जिसमें कुछ यूनिक है उसको वो पूरे इंटरनेट से ढूंढ के आपके पास ला के देता था, और वो भी 0.3 सेकेंड 0.4 सेकेंड में। और अब आपको वो जो रिजल्ट देता है, दे तो रहा है फास्ट ही, लेकिन 4 शुरू में आपके पास एडवर्टाइज होते हैं जो आप इजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो एज ए कॉमन यूजर। लेट्स सी फर्दर। Used to pride themselves specifically on how quickly their search engine finds you an accurate answer. But now you're either having to specifically invest more time just to scroll past their ads, or trust that the ads have what you want. Spoiler, they do not. Otherwise, those posts would be at the top organically without having to pay to get there. Oh, and you might have forgotten, but a decade ago, these sponsored links used to be highlighted in yellow, indicating to the user in a very obvious way that these aren't organic search results, so that you could just filter them out. And sometimes they were in their own cordoned off section to the right of the results. Not anymore. Now the sponsored search results look exactly like the genuine search results, apart from a tiny little, much less obvious sponsored text. And all of that is just for when you're searching for answers. Look what happens when you start searching for products. So I've been doing a lot of searching recently for a new chair. Wow. Yet again. Look at this. It is happening with each and every e-commerce value added product. Means मैं ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो लोग तुरंत परचेज कर सकते हैं, जिसकी
परचेजिंग पावर ज़्यादा है, चांसेस हैं कि लोग परचेज करेंगे। जैसे अगर आप चेयर सर्च करते हो, कोई फर्नीचर सर्च करते हो, कोई शूज सर्च करो, अगर आप अपने बारे में शूज सर्च करो गूगल सर्च पर और देखो आपको कितने सारे एडवर्टाइजिंग मिलेंगे, मुश्किल है कि आपको कोई ऑर्गेनिक पेज मिलेगा। सपोज करो कि आपने अगर कुछ सर्च किया है, सपोज करो टॉप 10 लैपटॉप आपने सर्च किया, आपके पास लैपटॉप के लिए ब्लॉग आने चाहिए, एक्सपर्ट के रिव्यू आने चाहिए, वो अगर आपके टॉप पे आ रहे हैं तो ये वर्दी कंटेंट है, ना कि आपके पास लगातार 2 पेज में पूरा का पूरा ऐड ही भरा पड़ा है, या फिर ऐसे पेज जो एफिलिएट लिंक को प्रमोट करते हैं वो दिए हुए। ऑब्वियसली वो टॉप 10 बेस्ट नहीं है, उनके हिसाब से बनाया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट इनकम या फिर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके एडवर्ड के थ्रू। तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है वो वैल्यू एडेड होता है, और इस तरह के जो प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन जो आप देखते हो एड्स के थ्रू, something that is not so useful compared to the organic result from the Google। तो ये आपको बहुत ही स्पैमी तरीके से दिखेगा और यही हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं। Not a single organic result in sight, but instead an entire carousel of shopping ads. And I think there's something particularly interesting happening with these shopping ads. And I'm not even talking about the fact that, no, it's not just you. These product listings are taking up more real estate on the results page nowadays than they used to. They are 34% bigger just compared to 2021. But it's not even that. See, I do a lot more internet shopping than most people. For one video, sometimes we're buying 20 products. And so while this one is more of a feeling and it's a little harder to prove, it is really starting to feel like with shopping, Google is specifically making the organic search results bad to make the best way to shop directly from the ads. Like whenever I'm searching for something specific, like let's say I was trying to find the thinnest mini fridge to fit a particular space in my room. Thinnest mini fridge. And would you look at that? Something that completely fits the description I've typed. A fridge that's not too big and is thin. So the sponsored results are spot on. Google clearly understands what I'm looking for. So what happened? So आप यहाँ देखो, इन्होंने सर्च किया है कि थिनेस्ट रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए, तो उसने इतना सटीक तरीके से एड्स ने उसको डिस्प्ले किया है कि अगर आपको पतला चाहिए तो वो पतला ही दिख रहा है। लेकिन आप ऑर्गेनिक रिजल्ट को देखो, क्या आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट में वो चीज़ें आ रही है? ऐड ने तो बहुत पकड़ लिया क्योंकि गूगल को पे कर रहा है, तो ऐड ने उसको पकड़ लिया, लेकिन क्या यही बात ऑर्गेनिक रिजल्ट के साथ हो रही है? आइए देखते हैं इसको। When I scroll down and look at the organic results. Okay, first up is Amazon. सारे बड़े बड़े। Nope. No, nope. I can't say that nope. it is Nope. slimmest. None of these products. Okay, so let's go back to Google search and just scroll down. Nope, that's not it. That's not it. That's not it. Nothing here is it. Every one of these fridges is short and wide, which is not what I was looking for. This is puzzling, right? Like surely Google, with its current level of intelligence and review data, has the ability to take me straight to the single best rated product for exactly what I'm looking for. And yet, does it not seem a little like Google's playing dumb? The difference between how tack sharp they are with making sure that the sponsored recommendations are spot on, but then at the very least not putting that same effort into their organic results, but maybe even deliberately making them less accurate. And when you look at the company's business model, it would make sense as to why they might do that. Because here's the thing, Google doesn't make more money if you find the perfect product. It's not like they're out there hoping you'll have an awesome Google experience and you'll go recommend Google to 5 friends. No, Google has your attention and they're making more money now by making more from your attention. Google's dream situation is that every company realizes that if they want to sell, they have to pay Google to be part of the sponsored buying section. And I can't shake the feeling that they are trying to create this pay-to-win environment, because this sponsored shopping segment is now not just a way to get a little bit of a visibility boost, it's been designed to be the only easy way for users to shop on Google. Like for example, let's see what happens when you try and search for something with a little bit more detail. So let's go back to chairs, but this time, world's most comfortable chair. As expected, the shopping carousel is filled with exactly the kinds of things I'm looking for, a varied selection of all very comfortable things with links to buy them. But then scroll down and most of the search results are just articles, list-based articles, which is a separate, very big problem that I'm getting to. So I nearly thought for a second, oh, this is a good result. That looks like a very comfortable chair for £75. And then you scroll down and you see, this item is available for adoption, not for sale. So I pay just for the chair to continue to exist. Like, what the? Oh, Google doesn't even seem to care if it takes you to scam sites. So many times when I've been browsing for what furniture might go into our future home, we are recommended sites like LitFad in this sponsored carousel. Okay, so LitFad reviews, Trustpilot's at the very top, and warning.
This company's trust score is currently unavailable due to a breach of Trustpilot's guidelines. This company has been pressuring people to change or remove their negative reviews. And even then, it's primarily 1 star. Okay, so Litfad is a scam. Beware of Litfad's customer service. It doesn't take Sherlock Holmes to see that this is a scam company. I don't see any way that Google wouldn't know that there are companies like this that they are actively promoting. And Google is giving the ranking. Even आप देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट के रिव्यूज में लिखा हुआ है कि Litfad is the wrong, बट स्टिल Litfad is ranking on Google. मीन्स गूगल को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है निगेटिव, मतलब इंटेंट को ध्यान में ही नहीं रखा जा रहा है. सिंपल है कि अगर आप क्लिक करते हैं, वहां जाके आप टाइम बिताते हैं, बार बार क्लिक कर रहे हैं, आप उस पर लोग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गूगल उसको रैंक हाई करता जाएगा. बट क्यों पढ़ रहे हैं, निगेटिव है, क्यों ना उसको दबाया जाए, उसको रैंक में नीचे किया जाए, क्योंकि फ्रॉड कर रहा है रिव्यू में, और भी नए लोगों के साथ फ्रॉड करेगा क्योंकि रीच उसकी हम बढ़ा रहे हैं. आई थिंक गूगल इज नॉट फेयर अबाउट इट. मुझे यहाँ एक और लगता है कि अगर यही चीज कोई छोटी कंपनी अगर है, माइट बी उसको उतना रैंक ही नहीं मिलेगा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. लेट्स वॉच दिस वीडियो अगेन फर्दर. Either Google is completely overwhelmed or Google doesn't care. If someone on Google is watching this, then correct me if I'm wrong. I would love to be corrected. Or at the very least, promise that you're working to fix this. But it sure looks like right now, as long as a company pays, it doesn't actually matter whether they're a scam or not. They go right to the top. I can't tell you how many times I've accidentally ended up on Chatbot app or Better GPT when I've been trying to search for ChatGPT, because they look basically the same and they're just paying to be ranked higher than ChatGPT. These companies, their entire business model is basically people accidentally clicking on them. It didn't always work like this. Google, when they started out, did not used to make a lot of money, and that was on purpose. You know, there was a time when Google would receive actual fan mail with checks and cash inside from people saying, "We love your product and you deserve to be making more money than you are." And that's because of the founders who, in their original paper presenting Google to the world, specifically said, "Advertising income often provides an incentive to provide poor quality search results. We believe the issue of advertising causes enough mixed incentives that it is crucial to have a competitive search engine that is transparent and in the academic realm." And yet, here we are. In Q2 2024, Google made $84.7 billion in revenue, 76.3% of which came from ads. And about 75% of that ad revenue is specifically from Google's search ads alone, as opposed to सर्च एड्स. मतलब आप देख सकते हो कि गूगल एड्स में आप 1000 तरह के एड्स देखते हो. यूट्यूब पे एड्स आता है, थर्ड पार्टी के थ्रू आपको एड्स दिखाता है गूगल, लेकिन गूगल सर्च एड इज द डोमिनेटिंग, और उसी का गूगल फायदा उठा रहा है. हर कोई अपने प्रोडक्ट का फायदा उठाता है. कंपनी का अपना अलग अलग स्टेज है जहाँ पे आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हो, यूजर उसका यूज करना शुरू करता है, फिर आप उसका एक्सप्लॉइट करके आप अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करते हो. बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो, यूजर एक्सपीरियंस को ख़राब करते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ से लोगों का ध्यान घटता है. आपको अगर कहेंगे तो फिर गूगल सर्च छोड़ के फिर लोग जाएगा कहाँ. मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि शायद 5 to 10% मंथली ट्रैफिक गूगल से हट के अब चैट जीपीटी पे जा चुका है. लोग डे टू डे में, अगर मैं अपनी 100 सर्चेस की बात करूँ तो आज से 2 साल पहले अगर मैं 100 सर्चेस करता था गूगल पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, कॉन्टेक्स्ट वो समझ नहीं रहा है, बार बार सर्च कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को चेंज कर रहा हूँ और मैं ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर. बट अब मुझे वो करना नहीं पड़ता है. सिंपल मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, उसे बताता हूँ जाओ इंटरनेट पे सर्च करो और मुझे समझाओ, और वो दे देता है. तो मुझे लगता है कि जो 100 सर्च मैं अगर दिन में करता था, उसमें से 70 सर्च मैं अब सिर्फ चैट जीपीटी पे करता हूँ. बहुत बड़े नंबर बता रहा हूँ, बट यस, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ रिजल्ट. तभी मैं श्योर शॉट होता हूँ, तभी गूगल पे जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि इसके आंसर मुझे वहाँ पे ज़्यादा अपडेटेड मिलेंगे, या मुझे उसका आंसर या उसके ब्रांड मुझे पता ही होता है कि मुझे वहाँ जाके पढ़ना है. किसी वेबसाइट पे स्पेसिफिकली विजिट करना है, उसके आर्टिकल को ही पढ़ना है, तो मैं उसके नाम के डायरेक्ट सर्च करता हूँ और तब मुझे वहाँ पे वो लेके जाता है और मुझे अच्छा लगता है. कुछ अननोन जैसे कुछ लिस्टिकल आर्टिकल मुझे पढ़ना है तो मैं वहाँ जाता हूँ. बट उन सब चीज़ों की धीरे धीरे ट्रैफिक जरूर चैट जीपीटी की तरफ जा रहा है, और चैट जीपीटी अपना खुद का सर्च इंजन लेके आ रहा है. AI इनेबल सर्च इंजन आएगा तो मे भी गूगल को डायरेक्ट कम्पीट दे सकता है, क्योंकि आप कुछ भी करो, चैट जीपीटी और जेमिनी आमने सामने खड़ा है और अभी एज चैट जीपीटी के पास है. यानी गूगल इतने रिसोर्सेज के साथ चल तो पीछे ही रहा है AI में. आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें और आगे मजेदार है. YouTube ads, etc. And then even for searches where there's no product to sell you and there's no company paying to sponsor it, what does Google do? Try to push their own services and their own initiatives. Like, how many people are there on Earth? 7.951 billion. Now, don't get me wrong, if I'm looking for a quick answer to a simple question, I appreciate how Google just goes, here you go. But in 2024,
this is not the right answer. It's actually not close to the right answer. We have 8.2 billion people. And if you click into it, you can see that it's showing us the answer provided by Google initiatives, even if the answer is way more outdated than other companies' sources on the internet. But okay, you probably catch my drift by this point. Google search... ये चीजें आपको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। आप जाके गूगल पे SEO सर्च करना, SEO, और आप सर्च करके देखो क्या रिजल्ट आएगा। आपको गूगल ही दिखने वाला है। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो वहां पे दिखता था मोज, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। SEO को किसी ने पॉपुलर किया है तो मोज ने ही पॉपुलर किया है। मोज अब आपको 6-7वें नंबर पे दिखेगा। हो सकता है उसने कंटेंट अपडेट नहीं किया हो और उससे अच्छा रिजल्ट किसी और कंपनी ने दे रहा है, लेकिन फिर भी गूगल टॉप पे है। आप जाके चेक करना। इसके बाद मोज को बीट किया था बैकलिंको ने, बैकलिंको को बीट किया सेमरस ने, और आज तीनों ही पीछे जा चुके हैं गूगल के अपने कंटेंट से। यानी गूगल SEO के लेके अपने आप को समझता है कि सबसे बेहतर है। हो सकता है, बट मैंने उस पेज को विजिट किया है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक बस मैंने एग्जांपल दिया है। अगर आप बैड एड्स की बात करते हैं, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। शायद आज से 1-1.5 साल पहले मैं बोट के वेबसाइट से बोट हेडफोन मैं उतना अवेयर नहीं था, मुझे उनका वेबसाइट का लिंक कुछ पता नहीं था। मैंने एक ऐड देखा, मैं उस ऐड पे क्लिक किया और फिर मैं वहाँ पे गया। वो बोट का वेबसाइट था, बोट लाइफ स्टाइल समथिंग लाइक दैट करके वहाँ बना था, और वहाँ बहुत सारे ऑफर्स थे, बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 1000 रुपीज़ के जो हेडफोन है, 2000 रुपीज़ के हेडफोन है, वो 300, 400, 500, 600 में दे रहा था। ऐसा नहीं 200, 300 में दे रहा, 600, 700 में दे रहा था। मतलब 400-500 का डायरेक्ट डिस्काउंट मुझे दिख रहा था वहाँ पे। मैंने उस वेबसाइट को देखा और इट इज़ लुक लाइक ए टू गुड टू बी ट्रू। फिर मुझे डाउट हुआ, फिर मैं उसके बाकी सारे सेक्शन पे गया, एड्रेस पे गया और बाकी चीज़ों पे देखा तो वो सब कुछ सही दिख रहा था। और फिर मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने गूगल किया बोट, और जब मुझे दिखा तो वहाँ पे आपको दिखा कि 2 अलग वेबसाइट है, और जो मैं वेबसाइट विजिट कर रहा था वो फेक वेबसाइट थी। और वो मैं कहाँ गया, कैसे गया था? मैं गया था एड्स के थ्रू। कहीं ना कहीं मुझे वो एड्स दिखा था, किसी वेबसाइट पे दिखा था या किसी वीडियो पे दिखा था, और मैं वहाँ पे गया। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के जो क्लोन वेबसाइट होती है, इस तरह की जो फेक वेबसाइट होती है, क्या गूगल उसको वेरीफाई करता है? अगर वो क्लोन है तो ऑब्वियसली है कि उसके पास वो नाम से वेबसाइट का बिजनेस एड्रेस नहीं होगा, उस बिजनेस का अपना पैन नंबर नहीं होगा, और इस तरह के जो भी एड्रेस होते हैं वो सारे इनवैलिड होंगे। क्या गूगल इसको वेरीफाई नहीं करता है? अगर इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। बट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ सिंगल केस। मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग आप लोग में से भी होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, जो आपने फ्रॉड वेबसाइट पे परचेज किया है, जो कि मेन वेबसाइट का नकली हो सकता है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। Results page is starting to look an awful lot like an old 2000s web portal, which is ironic because one of the biggest reasons that Google actually beat Yahoo to become the world's de facto e-library was because they specifically didn't try to be one. Well, Yahoo did because they knew they'd make more money if they kept people on their own pages as much as possible. But it's at this stage into my deep dive that I came to my second realization, that while Google has fallen from grace, changed who they are, and started to put the user's experience second, it's not all Google's fault. A lot of what's been making it so hard to find the right web page these days is also down to the people making them. If you work online in any capacity really, or you just have really boring friends, you'll have heard of search engine optimization, or SEO. SEO has become a massive industry with a market size valued at 1.8 billion in 2022, projected to reach 7.1 billion in 2028. The basic idea... You can think about it, how SEO is growing. और जब मैं अपना वीडियो बनाता हूँ SEO पे तो लोग इस तरह से बात करते हैं जैसे SEO is died. आप देखो खुद 2.1 से 7 एंड इन जस्ट नेक्स्ट 6 ईयर। तो इस तरह का प्रोजेक्शन है SEO का, और SEO के बारे में अभी बता रहा हूँ। SEO मीन्स नॉट ओनली गूगल सर्च इंजन। इन नेक्स्ट 6 months, 2 years, might be any other big player will come. But if your website is optimized, somehow your website is already future proof. क्योंकि SEO से जो ट्रैफिक आता है, उससे जो आने वाला ऑर्गेनिक रिजल्ट है, उसके जो लीड जनरेट होते हैं, उसका कन्वर्जन बहुत अच्छा है, उसके ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छे हैं, उसके कंसिक्वेंसेस जो हम कहते हैं बहुत ही स्वीट साइड है। तो SEO को थोड़ा सीरियसली लीजिए, डेटा से भी आप वेरीफाई हो रहा है। लेट्स सी फर्दर। Here is about analyzing the way that Google's algorithm ranks pages and then employing various tricks to make your page look as good as possible to that algorithm so that you get placed higher and therefore clicked more. And as the algorithm has changed, so have the kind of tricks you see being used.
Like, for example, you used to be able to boost your visibility just by having lots of reviews associated with your business, even if those reviews are negative, which led to, for instance, a scam in which a man named Vitaly Borka deliberately sent damaged or fake glasses to customers, hoping they would be angered enough to review bomb him, knowing that it would promote his site. But nowadays, you'll see these problems instead. Sites including buzzwords to capture as many possible search queries. So understand, look, कंपनी के बारे में लोग बस बात कर रहे हैं, भले निगेटिव बात कर रहे हैं, उससे गूगल को उतना कोई फर्क नहीं पड़ा. He get the traction, he got the eyeballs from the Google just because everybody is talking about. But what they are talking about, the context, the syntax, that is not getting by the Google. और मुझे लगता है इन चीज़ों पे उन्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है. As you can think of. That's why so many AliExpress listings have incomprehensible names that are just a string of largely unrelated words. And it's why articles like recipes, which should be so simple, have to start off with paragraphs of preamble about how grandma always made the best cozy warm winter autumn cookies 2024. Yeah, man. Relatable. People updating old articles, even if they do none of the new research but literally just change the title to 2024. This happens all the time. This is happening all the time. जब year end है, जैसे अब 24 से अब 25 आने वाला है, everybody will go, they will find 2024 and will going to change the 2025. यहाँ पे हालांकि मैं वीडियो से एग्री नहीं करता हूँ. गूगल अगर सिर्फ ये देखता है कि 2024 से 2025 हुआ है, उसकी रैंकिंग तो नीचे जाती है, जो कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ. गूगल में अपडेट का मतलब है कि आपके ओवरऑल कंटेंट का अपडेट. आपने 24 से 25 कर दिया और चांसेस है कि गूगल आपको उसके बाद पेनलाइज करता है, जो कि मैंने पर्सनली देखा है, ऐसा होता है. बट लेट्स सी, इसका अपना जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हैं इस वीडियो में. Heck. So many times I've been browsing the best X products of 2024 and I'll slowly realize as I scroll through the list that not a single one is from 2024. The website is effectively trying to scam me by recommending old products that make no sense today. They'll have erased all mentions of it being written in 2021 or 2022. And as far as Google's rules are concerned, if an article has been edited in 2024, it's now a 2024 article. Companies, especially those with lots of ads on their pages, trying everything they can to rank really highly for searches that are totally unrelated to their brand because they know it'll get them lots of clicks and lots of revenue. Like, why does Forbes have so many articles on supplements? Well, because supplement ads pay a lot. फोर्ब्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है. अगर आप पैरासाइट एसईओ के बारे में जानते हो, फोर्ब्स के ऊपर एलिगेशन है कि ये बहुत सारे आर्टिकल के बारे में बात करता है. मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा कि पैरासाइट एसईओ क्या होता है. अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ. होता क्या है कि इसके थ्रू जो छोटे बिजनेस हैं, जो छोटी वेबसाइट है, उसको किल किया जा रहा है फोर्ब्स जैसी कंपनियों के द्वारा. आप खुद सोचिए कि न्यूज़ जैसी कंपनी की जो न्यूज़ पब्लिश करती है वेबसाइट, वो आपको रंगोली बनाने के बारे में बता रही है दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे आपको डिशेस के बारे में बता रही है. उनको इसके बारे में कैसे पता? उनके जो समाचार बनाने वाले न्यूज़ राइटर है, उनको इनके बारे में स्पेशलिटी नहीं है. अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर स्टफ पब्लिश करता हूँ, दैट इज़ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम पोस्टिंग समथिंग. कोई क्रिएटर है, कोई अगर राइटर है, तो वो उसके बारे में एडवाइस कर सकता है क्योंकि राइटिंग के बारे में उसकी एक्सपर्टीज़ है. एक जो कॉमन जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, उसे न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लायक स्किल्स होते हैं. जब वो आपको ये बताता है कि हाउ टू क्रिएट समथिंग जो कि उसके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो जरूर कहीं से वो पैराफ्रेज करके सेंटेंस लेके आ रहा है और उसको वो प्रेजेंट कर रहा है इन दैट फॉर्म कि लोगों को लगे कि वो कंटेंट उसके लिए यूजफुल है, बट इट इज़ नॉट एडिंग एनी रियल वैल्यू. रीज़न ये है कि जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस लगाते हो तो आपको उसके कंटेंट की जो ग्रोथ है और जो उस कंटेंट का जो वैल्यू है यूजर के सामने नए तरीके से लेके आते हो और आप सच में कुछ वैल्यू ऐड करते हो यूजर के लिए, रीडर के लिए. हालांकि गूगल EEAT एल्गोरिथम के बारे में बात करता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक आपको ऊपर दे दूंगा. और EEAT एल्गोरिथम अगर गूगल सच में फॉलो करता है तो इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, क्योंकि उसमें मालूम ही है कि एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ट्रस्ट आपके लिए मेन फैक्टर है. और अगर आप इसमें से कुछ भी चूक कर रहे हो तो रैंकिंग में आपके लिए मुश्किल होने वाला है. To money. But here's the kicker. The only companies who are pumping out this much content and paying to boost their visibility as much as possible are the ones with a monetary incentive to do so. And the way they do that is being flooded with affiliate links. You can see this very much in action because there are papers showing that only a small percentage of review articles actually use affiliate marketing, but the majority of the results that come up on a search do use affiliate marketing. And that means it's got to a stage now where searching for the best of basically anything
is pointless. Almost every single article is a top 10 of products, not selected based on their merit, but in fact just whether or not they'll get a kickback when you buy them. How many times have you reached the #1 recommended product in these lists only to find that it's clearly an imported product from China being sold for multiple times what it's worth? I can guarantee that a large slice of these articles are written with the writer not actually having bought and tested all 10 products themselves, but instead having gone onto Amazon, searched for the highest rated products, ideally expensive ones so they can make more from the affiliate links, and spent 1 hour max compiling them into a list before spamming that list with buzzwords to try and capture as many people as possible who will actually trust this research. So why doesn't Google just fix it? Well, determining the quality of a result is actually really complicated. The best that they are able to do right now is to factor in the reaction of the users. From a Google presentation, what's crazy is that we don't actually understand documents. Beyond some basic stuff, we hardly look at documents. We look at people. If a document gets a positive reaction, we figure it is good. If the reaction is negative, it is probably bad. Grossly simplified, this is the source of Google's magic. So basically what this means is if a page is ranking high and it's getting lots of clicks, and those people end up on that page for ages, scrolling through the mire of deliberately vapid text interlaced with ads to find the actual answer they came for, then the algorithm figures, hey, they spent a long time there, that must be good, and the vicious cycle continues. And one thing that I find is a really unfortunate side effect of this constant arms race between Google and then these slimy growth at all costs sites is that every time Google updates their algorithm to counter the new strategies, it's most of the genuinely good, worthwhile sites that don't keep up with the times and just focus on making good content. Those are the ones who get buried, like mom and pop air purifier review site, housefresh.com, who actually do test the products, unlike the top 10 listicle magazines who don't. But now we come to the final frontier, because Google's success has always been to do with AI, but now they are integrating generative large language model AI in ways that are mostly making things even worse. You've probably noticed an increasing number of these AI overviews when you're searching for things coming up, and you've probably also noticed they're not very accurate. AI ओवरव्यू के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि AI के यूज करके गूगल आपको कुछ सर्टेन रिजल्ट देगा। इसमें होता क्या है कि गूगल जितने भी ऑथोरिटी साइट है उसके कंटेंट को पैराफ्रेज करता है और आपके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको मैंने एक वीडियो में भी हाईलाइट किया और यहाँ इन्होंने भी हाईलाइट किया है, जो कि एक मेजर कंसर्न है आने वाले समय में। मुझे लगता है कि गूगल इस पर काम करेगा और इसको हो सकता है कि आने वाले समय में इम्प्रूव करे, बट वट एवर द कंसर्न ही इज रेजिंग is worth to watch. Often serve you the kind of flagrantly wrong gobbledygook best described with the expression "good enough," coined by marketing executive and search expert AJ Cohn, whose research was super helpful for this video. But here's the thing. Let's assume that these AI pop-ups work perfectly 100% of the time, which is obviously the goal that Google's striving towards. How does that help all the sites that have helped to first gather that info? The sites who've done the work, researching and publishing the content that it seems like Google is using to train their AI? Answer? It doesn't. As a matter of fact, it actually seems an awful lot like Google is trying to replace those sites. And on one hand, you could argue that, AI summaries are amazing and they're going to make the search experience even faster. But after doing all of this digging, I'm starting to feel a slightly different way. What's to stop Google from deciding to use its AI to eventually replace the need to visit any other website? So you spend your entire browsing session within Google's search page itself, and then the only way to get ahead of the AI, pay for it. That way, the entire time you use Google, you're paying Google in some way or another. Maybe that's not the world that Google wants to build, but it's hard to argue that they're not moving close. Exactly, he will move for that kind of space जहाँ पे आपको एड्स की नई सेगमेंट ओपन होंगे और लोग वहाँ पे ऐड करना चाहेंगे और करेंगे भी। मेरा पॉइंट यही है कि जब इतने सारे क्रिएटर इतनी सारे कंटेंट राइट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू यूजर को इंगेज करना चाहते हैं, तो पर्सनल ब्लॉगिंग को तो किल ही कर रहा है ना गूगल। क्योंकि अगर आप बड़े ब्रांड को ही दिखा रहे हो, बड़े ब्रांड के कंटेंट को आप एआई में पैराफ्रेज करके दिखा रहे हो, उनके लिंक को, सब लिंक को ही दे रहे हो, ऑलरेडी कोई सेकंड पेज पे आपके पास नहीं जाता है कोई यूजर, और आप ब्रांड को ऑलरेडी किल कर रहे हो। फर्स्ट जो ओवरव्यू है उसका जो फर्स्ट पूरा का पूरा फोल्ड है पेज का, वो तो गूगल का ओवरव्यू ही ले रहा है, तो नीचे तो वैसे भी कोई नहीं जा रहा है। आप देखो, आपको मैं एक एग्जांपल दिया था शायद अपने पुराने वीडियो में कि अगर आप स्पीड चेक करने जाते थे तो आपको ओकला दिखता था। speedtest.net जैसे ही एक वेबसाइट आती थी ओकला के द्वारा, अब वो भी अब रिप्लेस हो चुका है। आप स्पीड टेस्ट सर्च करो तो गूगल का अपना खुद का एक टूल बन के आता है, वहाँ से ही आप स्पीड चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टूल है जो गूगल ने खुद ही बना दिए। मेरा कहना यह है कि गूगल अपनी टूल को बना सकता है, इट्स फाइन, बट इट इज़ नॉट सो बेस्ट कि वो हमेशा टॉप पे ही आए। मेरा ये पॉइंट है।
आप अपना टूल बनाइए और यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस तरह आप रैंकिंग डिसाइड करते हो बाकी वेबसाइट के लिए, आपको इसकी भी रैंकिंग डिसाइड करनी चाहिए कि हाँ 1 2 3 4 5 जो टॉप रिजल्ट है वो आएंगे, और अगर हमारा रिजल्ट कंपीट नहीं कर पा रहा है इन टॉप 5 के साथ तो हमारा छठा नंबर पे होगा। ऐसा तो गूगल करता नहीं है, गूगल ने कोई सर्विस लॉन्च किया वो हमेशा टॉप पे दिखता है। ये दैट काइंड ऑफ जो भेदभाव इस पे बाकी सारे वेबसाइट के साथ गूगल कर रहा है, समथिंग दैट नीड टू बी टेक केयर ऑफ। I think it's fair to say Google is taking some big swings into that final stage here, and it's going to sting their business customers even more than usual, considering that the very mechanism that they use. एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही कुछ ऐसा लग रहा है कि समय के साथ गूगल एक 1998 में लॉन्च हुआ जो 2000 2006 7 तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, और ये एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था कि जब इंटरनेट का मतलब गूगल ही हो गया, क्योंकि लोगों को यूआरएल याद करने की जरूरत नहीं थी, कुछ सर्च कीजिए आपको पास टॉप 10 में रिजल्ट आते हैं। बट अगर मैं 24 में देखूं, इतने सारे एसईओ एफर्ट के बाद बिजनेस को कुछ नहीं मिल रहा, यूजर को शक हो रहा है, शक मीन्स कि यूजर को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और वो चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मे बी कि कुछ ऐसा राइवलरी आ सकता है सर्च इंजन में जो गूगल की थोड़ी पोजीशन को हिला देगा, जैसे कि चैट जीपीटी ने अपने जेमिनी के साथ किया है। अब आप देख सकते हो कुछ समय से बिंग के साथ भी गुड न्यूज आ रहा है, और मे बी सम अदर थिंग इज कमिंग फ्रॉम चैट जीपीटी इटसेल्फ, गूगल की तरफ आपका चैट जीपीटी सर्च। तो बहुत सारी चीज है जो अपकमिंग 2-3 ईयर्स में अनफोल्ड होने वाली है, एंड होपफुली गूगल इसके बारे में प्रिपेयर हो, और जो हम कंसर्न इस वीडियो में इन्होंने रेज किया है, जो में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में वर्क होगा और उसके बारे में वो अच्छा लेके आएंगे, क्योंकि गूगल इज ऑलरेडी गोइंग टू द थर्ड स्टेज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट आपकी ग्रेट प्रोडक्ट होती है, सेकेंड आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, और थर्ड आप ओवर एक्सप्लॉइट करते हो और वहां से यूजर आपका भागना शुरू करता है। To make things harder for them, this AI that they're now having to compete against only works by stealing their content anyway. So this is the video that I thought कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसमें बहुत सारे कंसर्न इन्होंने रेज किए हैं जो मुझे लगता है जेन्यून है, गूगल को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिर ये वीडियो का मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या लर्निंग थी? देखो, जब आप गूगल सर्च करते हो, मे बी कि गूगल इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट रिजल्ट लाइक अर्लियर, आपके पास अदर ऑप्शन भी हैं। तो व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग, गूगल सर्च आप क्यों करते हो? आप अपनी स्टडी के लिए करते हो, रिसर्च के लिए करते हो, डे टू डे वर्क के लिए करते हो, आप वर्क प्रोफेशनल हो तो अपने वर्क को अच्छे से करने के लिए करते हो। इन दैट केस ओनली नॉट रिलाई ऑन सिंगल सोर्स कि ये मुझे जो दे रहा है अच्छा दे रहा है और इससे अच्छा कुछ होगा ही नहीं। यू शुड ओपन योर आई एंड यू शुड सर्च फॉर डिफरेंट सर्च इंजन, try and find out the good result. Maybe in that process you will learn a lot and you will find something new that may be worthy than only Google search. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ रिएक्शन पे। आप मुझे बताइए कि कौन से वीडियो पर मुझे रिएक्शन करना चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ पे जाके देखिए। मिलते हैं आपसे वहीं पे। बाय बाय एवरीवन।